Welcome everyone to the Cambridge University International Poetry Symposium. My name is Nishant and I'm the president of the Cambridge University India Society. First of all, I'd like to wish everyone a happy Indian Republic Day and thank you for joining us on this momentous occasion. We are really delighted to be representing Cambridge in presenting you with an amazing collection of poems that really try to showcase the diversity, unity, and go into our deep roots and heritage. I am so honored to be surrounded by such reputable poets and artists who have been awarded and recognized both nationally and internationally. So without further ado, I would like to introduce you to a very talented, bilingual Indian poet and story writer who will also be conducting our symposium today, Miss Pankuri Sinha. Thank you so much, Nishant, and warm namaste. Very warm welcome to all our viewers and friends and fellow poets, senior poets. First of all, Happy Republic Day. आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. Let us hope that our nation is going to develop into a secular, tolerant, really developed country where rights of everybody is respected, honored, people can pursue their dreams. With such hopes and aspirations, we are going to read poems today, we hope, and we work towards, again, a nation where the arts are flourishing along with the sciences. The artists are happy and they can express themselves. So, desiring such a country with a free voice, with big dreams, we will start our poetry event today. I am honored to share with you, like Nishant, we have a beautiful bouquet of poets from India and abroad, poets from India living in the UK. In fact, he is going to be our first poet today, this evening, Dr. Padmesh Gupta. He is again a bilingual poet and writer. He is originally from Lucknow. He is an academician of international repute, the director of Oxford Business College and founder president of UK Hindi Samiti. Currently, he's a patron. He has published and edited a Hindi magazine called Purvai for years and years, and I can tell you, my dear friends, that this is a very popular magazine in India as well. I have also been published in this magazine and have been delighted about it. So it's a magazine that touches people inside the country very much.
Dr. Gupta is an awarded poet. He has been given several prestigious awards, the most reputed of which is the Moturi Satyanarayan Award by the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee, in 2017. With this brief intro, although much more can be said about him, I request Mr. Padmesh Gupta, Dr. Padmesh Gupta, Padmesh ji, to please come and recite his poems. He's going to read for us both in Hindi and English his lovely poems. Very warm welcome to you, sir. फूलों में फूलों सा महकना है तो कांटों में कांटों से उलझना ही पड़ेगा। चंदन की धरती पर जन्म लिया है हमने, सांपों से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। With this one-liner, I express my congratulations and best wishes on India's Republic Day today. And thank you, Pankhuri, for your kind words, and thanks to Cambridge University India Society for organizing such an event of International Poetry Symposium today. I believe that poetry is the best form of expressions, expressing our feelings, our emotions, our thoughts. We diaspora Indian writers living abroad normally write two forms of writings which come across. One is a nostalgia feeling, missing our friends, family, city, country, where we belong to, where we come from. And other is we share our experiences in our writings where we live, in the society we live, in the country we live. So today I'm going to present two of my poems. First is in Hindi, Pravasi Putra. This Pravasi Putra is a poem by an immigrant son expressing his relationship with his father, who is far away back home. And this son cannot be with his father to help him in his old age. On the other hand, here where he lives, he is living here, building up his own life, career by himself, independently, without using his father's name or connection, like you're called, you are a son of or daughter of Mr. So-and-so in your own city. But here, you build up everything on your own. So this poem is Pravasi Putra. Pravasi Putra, अखबार वालों का बिल नहीं चुकाता, यात्रा के लिए ट्रेन या बस की बुकिंग नहीं करवाता, रात बिरात पिता के खांसने पर उन्हें पानी नहीं पिलाता, या फिर दौड़ कर नुक्कड़ से दवा की 2 गोलियां नहीं लाता। वह एक चश्मा टूटने पर नया चश्मा नहीं बनवाता, वह एक चश्मा टूटने पर नया चश्मा नहीं बनवाता, रोज सुबह पिता के पांव छूकर काम पर नहीं जाता। वह तो नई भाषाओं के अक्षरों में अपनी मात्राएं स्वयं खोजता है। एक बार फिर चलता है घुटनों के बल, नए संघर्षों से जूझता, नया कल ढूंढता। धूप के दिन बारिशों की रात खुद ही बनता है अपना साया। वह जानता है उसकी छत उसके सर पर नहीं, घर पर है। वह 30 त्योहारों में नहीं रहता है, लेकिन हर दुआ, हर फिक्र में, घर के हर जिक्र में। प्रवासी पुत्र पिता की उंगलियां थाम कर चलना शायद इसलिए नहीं सीखता कि एक दिन उसके कांधे पर हाथ रख कर चल सकेंगे उसके पिता। प्रवासी पुत्र पिता की उंगलियां थाम कर चलना शायद इसलिए नहीं सीखता कि एक दिन उसके कांधे पर हाथ रख कर चल सकेंगे उसके पिता। वह तो पंख बन जाता है पिता के सपनों का। वह तो पंख बन जाता है पिता के सपनों का। तारा धागा बुनता है, धागा तारा सीता है। तारा धागा बुनता है, धागा तारा सीता है। वह पिता के साथ नहीं रहता, पिता पुत्र के अंदर जीता है, पिता पुत्र के अंदर जीता है। हम भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। My next poem is on Brexit, which is happening very much here where I live. You would remember 4 years ago, we had a referendum in the UK, where if all night
Actually, all night counting of votes happened. Results started coming early in the morning. And UK is a country having a history of accepting people around the world, known for its diversity. Hence, results in favor of Brexit, leaving European Union, came as a surprise to many of us and to the world. So early morning, I read a news in one of the newspapers here, an article from one of the very leading UK journalists saying that we have woken up in a different country. And with this headline news, I got inspired and I could stop myself in penning these lines in form of a poetry. Here it is, Brexit. The birds chirping lacked their usual vigor. The summer sun had donned a coat of cloud. When I woke up this morning, I found my hanging map of Europe wounded. As if the sparrow at my window had its feathers clipped. He wasn't allowed to fly over the sea anymore. My global connection of fishes, fearful and despairing, lurking and shying away, were hiding in the corner of my aquarium. When I woke up this morning, I felt as if my English mother was carrying me in her arms away from my French father's home. My mother who never thought or taught multicultural neighbors would do any harm. Ever since I was a child, I have played with colorful butterflies with various coats. Now I am forced to see which ones are mine and which ones are not. When I woke up this morning, my dreams were broken. Nests in the trees of my garden were broken. Once radiant petals had blown away. All of the trust I had on my roof was broken. History of embracing the world was broken. Today is 24th June 2016. Today is 24th June 2016. When I woke up in my Oxford home, I saw a wind full of ego, the leaves trembling. I covered my face and went back to sleep, hoping when my eyes opened again, I'd see the clock's hand moved backwards, but the time hadn't changed forward. Hoping that when my eyes open again, I'd see the clock's hands moved backwards, but the time hadn't changed forward. And when the Game of Thrones has finished, love remains. The tune may change, music may change, but the song remains. Whoever loses or wins the race, friends remain. Whatever has changed, when my eyes open again, I hope that love remains, the song remains, our friends remain. Thank you very much for this lovely opportunity to Cambridge University India Society. Thank you very much, Nishant and your colleagues. Thank you. Thank you so much, Padmesh ji. That was beautiful. आपकी हिंदी कविता भी बेहद खूबसूरत, प्रवासी पुत्र, मन को छूने वाली, truly a heart-touching poem, and a very powerful statement on Brexit, a beautiful poem on Brexit that we all could actually relate to, even from India and Europe-wide. And indeed, thank you so much to the Cambridge India Society, to Nishant and all his friends, his beautiful, lovely team, for organizing this event and bringing so many of us together on this auspicious occasion. Our next poet today is from Poland. Her name is Alicja Maria Kuberska. She is again an award-winning poetess, a novelist, journalist, and an editor. She's a member of the Polish Writers Association in Warsaw and Albania, Director's Board of Sofle Literature Foundation. She is a cultural ambassador of the Inner Child Press USA. She has several anthologies published and she's been translated in various languages of this world. She has won many prestigious awards. The notable are the ones by UNESCO, the European Academy of Science, Arts and Letters, and she has been also nominated twice for the Pushcart Prize.
So this is a very short intro to this lovely poet who is going to join us today. It's a great honor to call upon you, Alicja Kuberska. Ma'am, please, a very warm welcome. Namaste. Thank you very much for your kind invitation. I am happy that I can join you and celebrate your holiday together with you. I would like to read my 2 poems. First one is entitled Footprints. There are many religions in the world, many rules. It doesn't matter to which God we pray, in which language we speak the words. We treat each man like a brother. We need each other. People are not lone islands upon an ocean. In the moments when the sun disappears and the darkness falls, when despair and sadness extinguish the will to live, someone will always extend a helping hand. We are all heading towards eternity. Like footprints we leave along the way, memory of good and bad deeds. In the reality, we are but travelers. Nothing is given to us forever. We arrive naked and we leave naked. Come day of everyday life. It will be fine again, and the world will regain its brilliance. Time will go on, and bad hours will pass. These ones filled with fear, suffering, and tears. One day the death will forget to sharpen its kite. Joy will return home to bloom on the faces. Sadness and fear will settle in the memories like a bit of dust. Only sometimes they will echo in the nightmare dreams, or will recall in the stories about long days of epidemic. Thank you very much. Thank you, Alicja. 2 beautiful poems about the secular, tolerant world that we all want to live in. Thank you so much. It was an honor to have you here. Our next poet is going to join us from India. Pankaj Prasoon is a very well-known name in the world of Hindi writing, a satire writer, a well-known poet, award-winning poet, columnist. He has been given over 40 awards by the Uttar Pradesh government. He has been featured as the youth icon by the leading magazines in India like India Today and the Hindustan Times. He is recording in studios day in and day out. So he's a very popular poet is what I'm trying to say. He is an author of several anthologies. We warmly welcome him. Pankaj Prasoon ji, please. Very hearty welcome. Thank you, पंखुरी जी. और सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंडिया सोसाइटी. एक्चुअली में कैम्ब्रिज ने आज एक ब्रिज बनाया है, ब्रिज ऑफ पोएट्री, ब्रिज ऑफ लिटरेचर बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम. तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी सोसाइटी का, और आप सब कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं, कैम्ब्रिज के लिसनर हैं, और जाहिर सी बात है कि आप सबका जो आईक्यू लेवल है बहुत ही हाई रहता है. सबसे हाई आईक्यू वाले लोग कैम्ब्रिज में पहुंचते हैं, ऑक्सफोर्ड में पहुंचते हैं, या फिर हार्वर्ड में पहुंचते हैं. तो मैं आपके आईक्यू लेवल का मैं टेस्ट करता हूं. मैं 4 लाइंस पढ़ता हूं और देखता हूं कि आप किस तरह की कविता समझ सकते हैं. सुनाता हूं कि सुकूने अपने बारे में बता दूं. जैसा कि मेरा परिचय दिया पंखुरी जी ने, मैं बहुत ही हाई लेवल का पोएट हूं. मुझे 5 भाषाएं आती हैं पंखुरी जी और निशांत जी. आपको बता दूं, मुझे राजभाषा आती है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, मुझे राष्ट्रभाषा आती है यानी नेशनल लैंग्वेज, मुझे मातृभाषा आती है यानी मदर लैंग्वेज, मुझे संपर्क भाषा आती है यानी कनेक्टिंग लैंग्वेज, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है. आप समझ गए मैं कितना विद्वान कवि हूं, है ना. तो मैं उसी विद्वता का परिचय देता हूं और 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको. बड़ी मजेदार पंक्तियां हैं, आपके आईक्यू लेवल को मैं टेस्ट करता हूं. कि सुकूने नफ्स के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए. कुछ जस्तरी हैं पंखुरी जी. कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए. मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मैं फिर से, पद्मेश जी भी हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूँ.
शायद इस बार समझ में आ जाए। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए, मैं लिखकर अब तलक किसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए और आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल देश में यही हो रहा है, वो बिल ला के नहीं समझ पा रहे हैं और हम बिल समझ के नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भाषणों पे ताली बराबर बजाते जा रहे हैं। ये हकीकत है इस वक्त की। आपको और एक छोटा सा सटायर सुनाता हूँ। सटायर क्या होता है? सटायर होता है कि जो आपको थोड़ा सा चुभता है और आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाता है, इसको सटायर कहते हैं। सुनिएगा कि हमारे देश में हिंदुस्तान गांधी की वजह से जाना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। गांधीवादी मतलब ये जो गांधी के थॉट को जो फॉलो करते हैं। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं, एमजी मार्ग, पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है? हमारे हिंदुस्तान की सड़कें देखिएगा और ये व्यंग आपको आनंदित करेगा। मैंने पूछा, गांधी मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं? उसका जवाब सुनिएगा, लॉजिक अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। पूछा, एक कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं? वो बोले, गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है, गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। कोरोना काल आया, हम सब घरों में कैद हो गए और बड़ा जबरदस्त हुआ, मास्क युग आ गया। मास्क ने क्या किया कि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि नाक ऊंची है, नाक नीची है, लेकिन मास्क ने ऊंची नाक के गुरूर को और नीची नाक के शर्म को एक ही कपड़े से ढक दिया। तो सोचिए, अगर गालिब होते, मिर्जा गालिब बड़े मशहूर शायर थे भारत के, अगर वो होते जिनकी वजह से शायरी की पहचान बनी, वो क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो आज के युग में होते तो कुछ इस तरह से शायरी कर रहे होते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश। हमारे एक मित्र है, कवि मित्र हैं लखनऊ के ही, हमने उनसे पूछा कि ये क्वारंटाइन और वैलेंटाइन में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन में दो लोग आपस में सट करके बैठते हैं, पास बैठते हैं, और क्वारंटाइन में तो मोहल्ला खाली कर देते हैं। कि हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले, करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले, और सुना जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। प्रेम पे कितना इफेक्ट पड़ा इस कोरोना का। आप देखिए कि प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में प्यार कर रहे हो और प्रेमिका ये छिपा जाए कि उसको खांसी आ रही थी, तो बाद में कितनी विकट स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं उन स्थितियों की आपको चाल लेने सुनाता हूँ। मजाज लखनवी साहब क्या कह रहे होते कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था। तुझे आती, अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, अपने लवर से कह रहे हैं, तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था। मेरा तू आइसोलेशन करा देती तो अच्छा था। तो तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था, इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था। और हमारे एक और आपको कविता सुनाता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि पूरी दुनिया जैसे लगे कि सोशल मीडिया पर आ गई है। हम लोग देखिए अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और कैम्ब्रिज में लाइव कविता पढ़ रहे हैं, है ना। यानी ना कोई वीजा, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई होटल का झंझट, है ना कोई इमिग्रेशन का चक्कर। सीधे सीधे कितनी आसान हो गई जिंदगी,
और हम लोग घर पे बैठे अपना रजाई ओढ़ करके और लाइव हो रहे हैं, ग्लोबल हो रहे हैं। क्या हुआ इस दौरान कि खुल गए उनके अकाउंट फेसबुक पर, खुल गए उनके अकाउंट फेसबुक पर बैंक में जिनका कोई खाता नहीं है, खुल गए उनके अकाउंट फेसबुक पर बैंक में जिनका कोई खाता नहीं है, वो कर रहे वो साइन इन और साइन आउट, जिनको करना साइन तक आता नहीं है, जिनको करना साइन तक आता नहीं है। ये परिवर्तन आए। अच्छा, हमारे देश में निशांत जी रुपया बहुत गिरता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर गिरता कहाँ है। मैं अक्सर खबरें आती रहती हैं डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा, समझ में नहीं आता कि गिरता कहाँ है। तो पद्मेश जी से एक दिन हमारी पद्मेश सर से बात हो रही थी, वो एक बड़ी अच्छी कविता निकल के आई, सुनिएगा कि रुपए का अवमूल्यन हुआ, यानी कि रुपया डॉलर के कंपैरिजन में कम हुआ। रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया, यानी 4 टाइम्स नीचे ढह गया। 4 रुपया, बस 1 रुपया रह गया। पूरे देश ने चिंता जताई, पद्मेश सर ने हमको मिठाई खिलाई। बोले पंकज प्रसून, खुशी मनाओ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया है। अरे हमारा 4 लाख का लोन अब 1 लाख रह गया है, अब 1 लाख रह गया है। ऐसे ही एक और आपको लॉजिक की कविता सुनाता हूँ। टेक्नोलॉजी ने लव को, प्यार को एक नया रूप दे दिया है। पहले वो दौर हुआ करता था कि जब चिट्ठियां लिखी जाती थी और चिट्ठी के इंतजार में दिन कैसे कटते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। चिट्ठी चलती थी, 8-10 दिन में पहुंचती थी। और फिर क्या होता था कि अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में ब्रेकअप हो जाता था तो चिट्ठियां फाड़ दी जाती थी। अब आजकल चिट्ठियां कोई लिखता ही नहीं है, तो फाड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। अब अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, लवर्स के बीच में अगर ब्रेकअप होता है तो अब क्या होता है? अब होता है ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, फेसबुक पे ब्लॉक कर दो। तो एक कविता है ब्लॉक प्रमुख। हमारे यहाँ चुनाव भी होता है ब्लॉक प्रमुख का, हमें लगता है असली ब्लॉक प्रमुख यही लोग हैं। सुनिएगा, शायद आप सब इस कविता से बहुत कनेक्ट करेंगे। आप सब नए जमाने के लोग हैं, तो कैसे कैसे स्टेटस अपडेट आजकल होने लगे हैं फेसबुक पर। मैंने एक बार लिख दिया गॉट इंगेज्ड, तमाम मेरे पास कमेंट आने लगे, अरे कौन है, कहाँ रहती है, कभी मिलवाओ, पहले बताया नहीं। बाद में मैंने लिखा कि देखो भाइयों, मैं गॉट इंगेज्ड इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, अब मैं अपने बॉस के साथ इंगेज हूँ। यानी कि गॉट इंगेज का सिर्फ एक ही मतलब निकाला जाता है कि अब ये जो है इसकी शादी आदि होने वाली है, मैरिज होने वाली है। तो आपको एक कविता सुनाता हूँ, इसी टेक्नोलॉजी से निकली हुई कविता। कि सोचिए अगर कोई किसी को फेसबुक पे ब्लॉक कर देता है, या सोचिए मुझे ही ब्लॉक कर दिया गया, तो क्या प्रेम खत्म हो जाता है? ना वो चिट्ठी जलाने से खत्म होता था, ना इससे खत्म होता है, ब्लॉक करने से। कविता सुनिए कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बतला देना, तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बतला देना, मन में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी, मन में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी, और बंद किए सारे दरवाजे लेकिन इतना बतला देना, दिल की जो ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगी, तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बतला देना। और इल्जाम क्या क्या लगाए जाते हैं जिसको ब्लॉक किया जाता है उसके ऊपर, कि एहसासों का कातिल मैं हूँ, मर्डरर, मर्डरर ऑफ फीलिंग्स, एहसासों का कातिल मैं हूँ, सारे गम का हासिल मैं हूँ। और अना देखिए यहाँ पर, सारे गम का हासिल मैं हूँ, एहसासों का कातिल मैं हूँ, और फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। वहां भी आपने स्पेशल बना दिया, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। और सारी चैट डिलीट मार दो। अक्सर क्या होता है, हम लोग चैट डिलीट करने लगते हैं। सारी चैट डिलीट मार दो, सारी चैट डिलीट मार दो, लेकिन इतना बतला देना, भाई आखिर जो बोले थे उनको कैसे साफ करोगी, तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बतला देना। अगला बंद सुनिए, क्या होता है जब हम प्रेम में होते हैं, इस वर्चुअल दुनिया के प्रेम में होते हैं, तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं।
कि बदल बदल के स्टेटस को जब तुम मुझसे लड़ती थी। आजकल स्टेटस चेंज हो जाता है तो उसके दिल का हाल पता चल जाता है, उसके दिल में क्या चल रहा है। बदल बदल के स्टेटस को जब तुम मुझसे लड़ती थी, वो फीलिंग सैड जो लिख देता था तो तुम भी रो पड़ती थी। और साइन आउट अपने जीवन से, आज टर्मिनोलॉजी देखिए कि पोएट्री में किस तरह से साइंस की टर्मिनोलॉजी आ रही है कि लॉग आउट अपने जीवन से, मुझे किया यह पुण्य तुम्हारा, ऑटोग्राफ हृदय के अंदर, उसे हटा क्या पाप करोगी, तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बदला देना। और पहले क्या होता था कि चिट्ठी जाती थी और उधर से चिट्ठी वापस आती थी तो अक्सर प्रेमी खत को चूम लिया करता था, लेकिन अब क्या करता है कि जब प्रति उत्तर मिला प्रेम का, प्रति उत्तर माने लव यू टू, जब प्रति उत्तर मिला प्रेम का, मोबाइल को चूम लिया था। जब प्रति उत्तर मिला प्रेम का, मोबाइल को चूम लिया था और आंखों की गहराई नापी थी, सेल्फी को जूम किया था। वहां पे आपको सुविधा दे गई, आप आंखों की गहराई, शायर लोग जो बात करते हैं आप नाप सकते हैं, जूम करिए उसकी सेल्फी। जब प्रत्युत्तर मिला प्रेम का, मोबाइल को चूम लिया था, आंखों की गहराई नापी थी, सेल्फी को जूम किया था, तो क्रॉप करी है सारी फोटो। जब हम प्रेम में होते हैं तो साथ में सेल्फी लेकर के उसकी डीपी लगाते हैं, जब ब्रेकअप होता है तो उसकी वाली डीपी हटा करके अपनी वाली लगाते हैं कि क्रॉप करी है सारी फोटो। एक प्रश्न अंतिम मन में है, नफरत का जो पासवर्ड है, क्या तुम उसको क्रॉप करोगी, तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बदला देना। और अंतिम 4 लाइनें, अंतर्मन की विचरण सीमा, अंतर्मन मीन्स सोल, अंतर्मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है। अंतर्मन की, अंतर्मन जहां जहां तक पहुंच जाता है वहां वहां तक इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है। अंतर्मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है। वॉल फेसबुक की थी पहले, आज हमारे बीच खड़ी है। वॉल फेसबुक की थी पहले, आज हमारे बीच खड़ी है। और आज हमारे बीच खड़ी है, और मुझको माफ नहीं करना तुम, लेकिन इतना बतला देना, दिल में ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या खुद को माफ करोगी, तुमने ब्लॉक किया है मुझको लेकिन इतना बतला देना, मन में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी, बंद किए सारे दरवाजे लेकिन इतना समझा देना, दिल की जो ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगी। और चलते चलते 4 लाइनें, चूंकि रिपब्लिक डे है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा देशभक्ति की मैं 4 पंक्तियां सुना करके मैं अपना स्थान लूं, अपनी जगह लूं। मैं सुनाता हूं वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां कि वंदे मातरम नहीं हिंदू का मुसलमान का भारतीयता की पहचान वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदना हर एक मातु की है ममता का जीवित निशान वंदे मातरम, वंदे मातरम हिंदुओं के राम राम में है अल्लाह के बंदे की अजान वंदे मातरम, और बुद्ध जैन नानक का रोम रोम बोलता है पूरा हिंदुस्तान वंदे मातरम। वंदे मातरम देश प्रेम की अखंड ज्योति क्रांति की धधकती मशाल वंदे मातरम, मातृभूमि की तरफ आंख जो उठाए कोई बन जाता है सशक्त ढाल वंदे मातरम, वंदे मातरम में छिपा है हल उत्तर भी, फिर क्यों ये बनता सवाल वंदे मातरम, और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, गूंजता रखे हजारों साल वंदे मातरम, गूंजता रखे हजारों साल वंदे मातरम, गूंजता रखे हजारों साल वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंडिया सोसाइटी का, मुझे अपने मंच पर आमंत्रित करने के लिए। निशांत जी और आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है इस पूरे कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद पंकज भाई, आपने एकदम छुमा दिया। आपने जो उर्दू की पंक्तियां सुनाई, कुछ एक सचमुच मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन 2 बातें, 2 पंक्तियां मैं कहूंगी गुलजार साहब की, उनके लिए। आपका इशारा नेताओं की ओर भी था कि देश में बातें समझ में आए ना आए, तालियां बज जाती हैं। बहरहाल, लेकिन उर्दू के लिए तो ये कहा जा सकता है गुलजार साहब के शब्दों में कि वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबान उर्दू की तरह
है ना, इतनी खूबसूरत वो बात थी. So what I'm saying, my dear friends, and I'm pretty sure that you remember this song. Actually, it's a line from a song. It's a lyric that I just quoted to praise Pankajji's beautiful shairi here. Dear friends, you know, Pankajji was talking about so many Urdu shairs along with his own poems, marvelous. And he was also talking about some of the very deep issues inside the country of development and of the betterment of everybody. So thank you again, Pankaj Rasunji. And our next poet today is a very reputed, noted poet, again, a global poet. She is joining us from Israel. She is originally from Russia. She writes in Russian, but she translates from English, Spanish, and Hebrew. She's really a learned poet and a translator, like I said, a novelist. She has also authored several books for children. She has 8 poetry collections and 20 books for children and teenagers. She has won several awards, and she is the organizer and the jury member of several awards as well. She's also the designer and the founder president of the International Festival of Russian Poetry and Culture in Israel, David's Harp, which has been ongoing since the last 9 seasons. She's also the editor of a very popular, prestigious magazine, literary magazine named Kologov, that is the calendar. And I have the honor of being published in it as well, along with several other poets that I know. So, Lyudmila Chebotare, very warm welcome to you, and we are so honored to have you here. Hearty welcome. Thank you very much, Pankuri. Thank you to all people who invited me to participate in this very prestigious event. I'm really happy to say to express my gratitude in 2 of my native languages. My mother tongue, спасибо and toda raba, in Russian and in Hebrew. My congratulations to all Indian people with this holiday. But you know, in Israel, it somehow always happens that joy connects to grief. Grief connects to joy. And one comes after another. You have your holiday on 26th of January. We have our very sad day on the 27th of January. It's International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust. It is commemorating the tragedy of the Holocaust that occurred during the Second World War, and it commemorates the genocide that resulted into the death of 6 million Jews and 11 million of other peoples by the Nazi regime and the collaborators. So maybe this is the reason why I've chosen my first poem to be dedicated, to be devoted to the victims of Holocaust. It is called Granny and Grandson. And one more thing that I wanted to mention, that
I may be of the rarest dinosaurs that still searches the rhymes in their poems. So it's a rhymed poem, Granny and Grandson. Our world is everywhere the same. Granny Rivka teaches little Yakov. It's a pity we are leaving Krakow, but to our home bad people came. Have you packed your notebooks and pens? Here is your dear teddy bear. Please don't ask me why and when and where. But I swear you will find new friends. Tired wheels have no rest at all, taking Polish people very far. Why did mommy sew a yellow star to the clothes of our baby girl? Don't you know it's the David's shield? Poor being angry, she pretends. Granny Rivka's story never ends, and the train stops in the snowy field. Yankel, let me see your face and hands. What with nails? You've beaten them again? Granny's eyes are full with tears of pain. This is Auschwitz. Here our journey ends. And another thing that I wanted to tell you, that it is also dedicated to the roots of my family, as I've never in my life seen my granddad and my grandma and my uncle. They were closed in school, and the school was set on fire, so they were burnt alive long before I was born. My next poem is also quite sad, but it's about love. Columbina. A colorful gown, a rowan crown, you have no equal. Reveal me your name, oh my beauty. My name means a dove. Your wandering life is an endless adventurous sequel. For what are you searching? My Lord, I'm searching for love. But your harlequin scoffs at you with his heart hard and stony. Pierrot sobs for lost Columbina he so adored. Who won the old argument, Gozzi or maybe Goldoni? The answer's unknown to me, O my merciful Lord. Take this silver key that I've brought as my cordial present. It saves from inimical glares and gossips and pain, but opens doors to all fortunate, faithful, and pleasant. You're crying, my dove. No, my Lord, these are drops of the rain. So why are you chasing for sham and for fraudulent feeling? There is a black distance that's hiding behind the gray mist. And why do new countries and meetings seem so appealing? Because, oh my Lord, loveless heart,
simply cannot exist. Thank you so much for your attention. Toda Rabba. Thank you so much. Thank you so much, Ludmila Chevotara. It was an honor to listen to you. Well, first of all, my profound apologies for the accident that you just described. It was not an accident, it was an arson, it was criminal, it was murder, what was done to your family members. I am very sorry, I apologize for that. History has very dark chapters to teach and to learn from. So thank you for your very powerful poem on the Holocaust. It's a very powerful poem of resilience, of strength, of human bonding, endeavors, and ultimately hope. And thank you again for that beautiful poem of love and hope called Columbina. And indeed, that I identify with that poem. But before I say more about it, I would like to share with you, dear friends, that I have the honor of having translated this poem on the Holocaust, grandma and grandson. It's a very touching poem. It's a poem of survival and of hope in the darkest of times. So as we get to the war of citizenship and as we get to the war of immigration in so many places in this world, and to the war of people's rights, these are the poems that can inspire us to always be liberal, to be united, to be tolerant, to be humane. So thank you again for that very powerful voice of yours, Ludmila Chevotara. It was an honor to have you among us. Yes, these are poems of also of sadness. It's a moment to grieve the 27th of January for all of us, for the whole of humankind. But we turn it into a day of strength and power and resilience and hope to learn from history and to never repeat our mistakes against any one particular community or religion or ethnicity or just at random. So with these big hopes from ourselves and from our leaders and from the people of this world, I thank you again. It was an honor to have you. Thank you so really. I'd now like to introduce our last poet for today. She's a very esteemed and reputable poet. She has written poems both in Hindi and in English. She's a bilingual young poet and story writer from India. She has 2 books of poems published in English, 2 collections of stories published in Hindi, and 5 collections of poetry published in Hindi. And many more are still lined up. She has also been publishing in many journals, home and abroad. And she has won many prestigious national and international awards. To name some, she has won the Girija Kumar Mathur Award for Hindi poetry while studying for a bachelor's in 1995. She has won the first prize for poetry by Rajasthan Patrika in 2017, the Pratilipi Award for Poetry in 2018, and also the Mathura Prasad Gunjan Award for a second collection of poems in Hindi in 2019. Her poems have also been translated in over 22 languages, and some translations have been in magazines in Serbia, Romania, Spain, Macedonia, China, Bangladesh, Nepal, and the list goes on. She's also received many international awards from Russia, Romania, Nigeria, Tunisia, and other countries for her writings within English. And most recently, she won the Special Jury Award in the Premio International Poetry Contest in Italy. Her writing is dominated by themes of exile, immigration, gender equality, and environmental concerns as well. And she has also worked in various positions as a journalist, lecturer, and a content editor. So without further ado, I would like to introduce you to Miss Pankuri Sinha. Please go ahead.
Thank you so much, Nishant. Thank you so much for your kind words, for your generous introduction. I am so honored. Thank you again to the Cambridge Society for this opportunity. I'm just humbled and honored. Wish to read two poems, my dear friends, for you, one in Hindi and one in English. The one in Hindi is called Pressure Cooker. It is actually written on this cooking device called the pressure cooker, using it as a metaphor and an idiom. Cooking is something that is around the home, around the kitchen, around the family, around this idea of love and homemaking at a time when food and every meal is being associated with the farmers' protest in this country today, when farmers have been braving such wintry conditions to ask the government for certain rights. I think that I wish to read this poem, and here it goes. Pressure cooker. प्रेशर कुकर इन दिनों पुराना पसंदीदा इश्तहार था। जो बीवी से सचमुच करे प्यार वो शादी से कैसे करे इनकार। कुछ टेढ़ा सा राजनैतिक घुमाव लिए प्रेमी युगल इधर कुछ दिनों से अगर साथ नहीं रह रहे तो अक्सर खाने पर मिल रहे हैं, घर भी खाने पर, लेकिन हमेशा ही इनके रिश्ते के तात्कालिक तापमान पर बोलने वाला, नियंत्रण की भी विधियां बताने वाला ये व्यक्ति कौन है। ये बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग के आसपास की बात है, कनाडा के किसी प्रदेश में, प्रांत में। और याद रहे कि कनाडा के उत्तरी प्रदेश बहुत ही बर्फीले, ठंडे, लगभग अनबसे प्रांत हैं। उन लोगों के प्रांत जो यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, जो शब्द ही अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है और जिसे शायद ही कोई सुलझा रहा है दुनिया के किसी भी बसाए हुए देश में। लेकिन कनाडा का वह एक फ्रेंच भाषा भाषी प्रांत जहां अलगाव को लेकर 1000 मतदान हो चुके हैं और अभी हाल ही में एक वृद्धाश्रम में आग की भयानक दुर्घटना सबके दिल दहलाती घटी थी। शायद वहीं पकड़े गए थे कुछ जिहादी, कुछ आतंकी, और जैसा कि ये लोग कहते हैं, करते हैं, घरेलू बम बनाकर चलाते हैं। इस बार बना रहे थे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर तब तक स्मृतियों में धरोहर सी एक चीज बन गया था। उसमें पकने वाला मांस जिंदा भेड़ बकरियों में तब्दील, दूर पहाड़ों पर घूमने वाला आजाद जानवर। काफी रोमानिक किस्म की विधियां पकाई जा चुकी थी तब तक प्रेशर कुकर में। ये लगभग किशोरावस्था में पाक कला के उत्साह भरे दिन थे और एक नवोदित मित्र जिनका पदार्पण मेरी जिंदगी और घर में भी नया लेकिन पुख्ता था। मुर्गे अथवा मुर्गी को बोतल की सॉस के साथ कुकर में सीटी लगवा चुके थे और मैगी समेत विदेशी तर्ज के खाने जहां सबको लुभा रहे थे, लुभा रही थी ढाबों से खुली नई नई दुकानें भी। घर में अब भी सिल बट्टे पर मसाला पिसता था। द्वैत और अद्वैत पर निबंध लिखने के होमवर्क कॉलेज में मिलते थे। एक प्रेम मैंने उसी वक्त तोड़ा था और जिंदगी तभी से जीवन शैलियों की राजनीति का अखाड़ा बन गई थी। So this was my poem on the pressure cooker, which talks about the jihadis, the terrorists using the pressure cooker to make a bomb at the same time. So many dating stories around it and stories of homemaking and family gathering and a little bit of Canadian politics, because this poetry was written in Canada while I was studying in the University of Calgary, my PhD in history. So that was the context behind it. But I would like to read my second poem now for you, dear friends. I hope that you liked the pressure cooker one, and I hope you will relate to this and enjoy this. This is called Lovely Summer Afternoon. What a beautiful fantasy in these wintry days. And let us hope that we'll get to a summer without COVID. This one actually doesn't mention COVID. It's just about beautiful, lovely summer afternoon. Lovely summer afternoon, two of us out,
No snow, no rain, no sleet, no drought. All bad news far away from us. What a blissful hideout. How nice, just music so loud. Don't even read in the morning, the papers online, Twitter dormant. Watched a hockey game or a cricket match, and as soon as a notification of yet another fire popped up, put it aside. It's our day out. In the fields and the mountains, leaves churning underneath our feet, and no freshly dug graves. Am now a product of the positive reading club, all my senses clipped, common and special, emotions checked, border crossings inserted. There's too much to think and worry about. Too many protest marches to be taken out, but later, in this breeze under the open sky, in a woodland so far away, my dear, let us just celebrate the healing power of nature and love, pure and selfless, enduring and ductile. Thank you. So that was a love poem with a little bit of a satire on leaving everything. Thank you. Thank you so much. Leaving all worries of this world aside and just being cozy in your house. So thank you so much again. Great. Thank you so much, Bankuriji. That was truly inspiring. Both poems, The Pressure Cooker and A Lovely Summer Afternoon. You've truly inspired us with your works and the variety and diversity of themes that you've expressed within mere 2 poems. And with that, I'd like to thank everyone today who's joined us, every single poet today who's dedicated their time and showcased their talent and work today. What today has really shown us is, despite it being Indian Republic Day, we have all come together as an international community. We've all come together to showcase unity and diversity, because no matter where we come from, no matter what language we speak, we're human after all. We all express the same emotions. We all feel the same feelings. We feel love, hatred, anger, happiness, and we laugh. All these feelings come together regardless of where we come from. And I think in today's poems, they've beautifully expressed all of those emotions. So I really want to thank every single poet today for their poetry and work that they've displayed today. And I enjoyed it very much, and I'm sure everyone has enjoyed today's symposium. So on that happy note, I'd like to thank you all once again, wishing everyone a happy Indian Republic Day. Stay safe in these times, and we hope to see you all very soon in the future. And I hope that this is just the beginning of working with Cambridge and showcasing poetry and literature on a global stage. So thank you all very much. Namaste. Dear Nishant, President of the Indian Asian Students Association in the Cambridge University. First of all, greetings from the Nehru Center and the High Commission of India, UK, on the occasion of 72nd Republic Day of India. Greetings to all my lovely students pursuing their studies in the Cambridge University, which is very special. I may like to convey my best wishes on behalf of the Nehru Center and the High Commission of India, organizing International Poetry Symposium in this esteemed university on the special day, which is a Republic Day of India. It is a matter of pride and great honor for me to sharing my best wishes on this special occasion. Frankly, we would love to participate in a big manner in this symposium, but suddenly we have our own event
being organized by the Nehru Center and the High Commission of India on the occasion of celebrations of Republic Day, and therefore we could not take part extensively. I am very much sure in the near future, if university is keen to organize such events, the Nehru Center and the High Commission of India would be delighted to participate very much in a broad manner. I am happy to inform you that the director, Mr. Amish Tripathi, has shown his interest sharing and distributing a letter of appreciation to the participants in this symposium. Thank you very much. All my best wishes once again, and greetings from the Nehru Center and the High Commission of India on the occasion of Republic Day. Thank you very much.